So now let's continue the second part of internal energy. So again I'm repeating degree of freedom by law of equipartition for each sub-mode of degree of freedom means each sub-mode of the individual mode of energies is called degree of freedom. उसका definition मैंने दिया, ये ध्यान में रखना, it's a statistical approach. Every बिकॉज मॉलिक्यूल देख नहीं सकता तो हर एक मॉलिक्यूल का कितना वेलोसिटी है, कैसे वो रोटेट हो रहा है, हम लोग फाइंड नहीं कर सकते. तो एक एज अ एवरेज हम लोग वो फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है. एंड वी सेड एज आई सेड इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री वी आर नॉट द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इज ओनली, it has got vibrational kinetic energy. In chemistry, in physics we have got vibrational as well as rotational both. Okay, sorry, vibrational kinetic energy and vibrational potential energy. So with this idea, again watch that, if you're not understanding, watch 2-3 times, that will be good. And now let's say if I make some degree of freedom, okay. Let's say here I have taken gas, then translational degree of freedom, rotational degree of freedom, and vibrational degree of freedom. Vibrational degree of freedom. Vibrational degree of freedom. It can be for chemistry. Here I can write for physics, PHY, for chem के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ दिस इज, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट दैट कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा वेट, तो फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज दैट. तो VF मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशन विल बी 3n माइनस, दिस इज फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशन. तो बस हम ये करता हूँ, दिस इज 3n FT plus FR. This is, and for physics it is twice of this. Why twice? Because in this case we are taking just vibrational kinetic energy. In physics we take vibrational kinetic plus vibrational potential both. SHM में पता चलेगा. Now let's say if I take first is monoatomic, like He. So n is 1, so this is 3, this is कुछ नहीं, this is 0 again. ये नहीं लिखा है क्यों? It's a negligible. That's why we are neglecting that, because एक ही एटम है तो अपने उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा. जैसे भी मैंने दिखाया था, ये एक एटम है, मान लो ये एक एटम है, तो अपने इसी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट होगा, इसी एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस दिख रहा है, और इसके अबाउट अगर रोटेट होगा तो क्या होगा, इस एक्सिस से एटम का डिस्टेंस क्या होगा, इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द एटम, r will be 10⁻⁻10, तो mr² will be even more smaller, so we can neglect that. So that's why we are writing like this, negligible, 0. Physics also it is 0. Next is diatomic, like H2. Example, your N is 2, ये 3 रहेगा, it will become 2. Ix, Iz will be negligible. Okay, this is 6 minus 2, so this will be 3 into 2 6 minus 5, so that is 1. यहाँ पे क्या हो जाएगा, it will be 2. Okay, twice, because यहाँ पे vibrational kinetic energy plus vibrational potential energy. In chemistry we take only vibrational kinetic energy, तो इसका twice हो जाएगा. ओके, जितना उसका ट्वाइस होता है, ठीक है. देन यू हैव
polyatomic. So if I write here polyatomic, now polyatomic में फर्स्ट जो एटम्स लीनियर है, लेट्स से लीनियर, इनका शेप लीनियर है, लाइक CO2, N is 3, N3 है तो इसमें तो 3 रहेगा, बिकॉज प्योर ट्रांसलेशन विल बी ऑलवेज 3. तो चाहे कोई भी मोनोएटॉमिक, डाई, ट्राई, कोई भी शेप हो, द फॉर प्योर ट्रांसलेशन the for any atomic polyatomic gases, either mono, di, tri, the pure translational kinetic energy will be because of 3 degree of freedom. इसमें 3 ही आएंगे हमेशा. ये कितना हो जाएगा, ये 2 रहेगा. जैसे मैंने दिखाया लीनियर है तो क्या होगा, C ऐसा होगा शेप. तो जो इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी नेग्लिजिबल. तो उसके अलोंग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0. तो फिर ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 4, 3 into 3 क्या हो जाएगा, 3 into 3 minus 9 minus 4, तो this will be 8. Then let's say we have non-linear structure. If I take non-linear structure, it is linear, non-linear. Polyatomic में ही non-linear. Non-linear, that is N is 3, like we have, let's say first SO2. SO2 होगा तो क्या हो जाएगा, this is 3, this is 3. Non-linear है तो it is 3. देखो मैंने अभी ऐसा एक लास्ट वीडियो में ऐसा एटम दिखाया था मैंने. This is 3, this is 3, this is 3, this is 6. N is 4, that is N is 3. क्या हो जाएगा, it will be 3, 3, 3, 4, 12, 6 हो जाएगा, this is 12. N is 5, third is CH4, so that is 3. ये हमेशा 3 रहेगा, this is 3 and this is 9, this is 18, just 3. थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इस पे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ गिवन मॉलिक्यूल. तो ये फिर हो जाएगा. यहाँ पे देखो चाहे कोई भी एटॉमिक हो, द ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑलवेज 3, बिकॉज एनी द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. हम लोगों ने इसमें किया अभी रिजिड बॉडी मोशन में. एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन हैव वन कंपोनेंट अलोंग x, वन अलोंग y, वन अलोंग z. So velocity, so kinetic energy due to x component of velocity, kinetic energy due to y component and kinetic energy due to z component. ये तुमको आ जाएगा, ठीक है ये. So this becomes our net degree of freedom here. Okay. So ये that is law of equipartition of energy and this we have to keep in mind. जब तक क्वेश्चन में मेंशन ही and vibrational degree of freedom comes into play, and if there is a vibrational degree of freedom तो vibrational kinetic energy भी आएगा. Vibrational energy that will come because of high temperature. जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो, take these two only. वाइब्रेशनल फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए अलग थी, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे. इसके लिए सिर्फ तुमको अज्यूम करना है एट हाई टेम्परेचर. जब तक क्वेश्चन में मेंशन तब तक ये लेना नहीं है. ओके, क्लियर है ये. सो नाउ इफ आई इसको और थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ. जैसे अभी किया तो internal energy for n mole of it is n f degree of freedom RT by 2 for each degree of freedom. इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं हम लोग. तो U becomes n f R by 2 into T. That becomes internal energy of the, again this is we are doing for gases. जो हमने देखा वो that is for gas only. And which gas? Ideal gas. तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने ये किया दैट इज
if you remember thermodynamical potentials, we cannot get exact value. यहाँ पे क्या होगा, exact value कब आएगा, when you assume u 0 at t is equal to 0, then only you will get exact internal energy. Otherwise we always get change in internal energy. Change in energy we always get. Exact energy कब आएगा, when you assume कि at certain temperature energy is 0, then only you will get exact. जैसे हम लोगों ने potential energy में किया था. यहाँ पे this u is also written as NCVT. CV is molar heat capacity at constant volume. CV is molar heat capacity at constant volume. इस पे हम लोग आएंगे, अभी मैं लिख रहा हूँ, इस पे मैं आऊँगा ये कैसे आता है. ओके, so this u, so from if you compare this and this, तो क्या हो जाएगा, CV becomes FR by 2. Means molar heat capacity at constant volume is FR by 2. ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है. This we have to keep in mind. Okay. Now after this then CV is FR by 2. तो ये कैसे आता है, ये हम लोग प्रूफ करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस. ओके, तो तब तक तुमको ये ध्यान में रखना है. Now after this, when we have completed this, now let's get into, if we have done the internal energy, we have understood the internal energy, all of you. So now we'll go for the next section, that is laws of thermodynamics. So that I'll be doing in the next part. Okay, so I hope go through this. CV is F is the degree of freedom, N is number of mole, T is the temperature. So if I here write generally, यहाँ पे और भी मैं कुछ बोल देता हूँ. यहाँ पे internal energy generally depends on temperature. If it is very high temperature, then internal energy is dependent on basically it becomes temperature dependent, depends on other factor. But in general, internal energy of gases, so we can write du is NCV dt. Here CV is constant. CV is molar heat capacity is constant up to, if temperature is very CV is almost constant, it is temperature independent. So that's why if you differentiate this, so NCV is taken outside, this is dt. तो CV is molar heat capacity, जब तक मेंशन नहीं हो तब तक तुमको you have to take it is temperature independent. It is almost constant. At very high temperature, CV will depend on the temperature. But जब तक मेंशन नहीं हो तब तक CV molar heat capacity at constant volume is temperature independent. So if you differentiate, we get this. And as I said कि thermodynamical potential, that like U, H, G, S, A, these all are, its exact value we cannot find unless we assume 0 at somewhere. We always get change. We always get du, we always get G, dH, dG, ds, dA, like this. We always get change in thermodynamical potential. This depends on the path, so I have said another name, that is thermodynamical potential. Clear है? So we always get change. Okay. So here du is, so this equation we are going to use frequently for a gases. This is for a gas. This is for a gas. Which S is, because we have taken SES is my system, simple compressible system, which means gas only. Okay. So in the next video, I will go for the laws of thermo. So we have developed work, and since U is a path state function, so we have written exact differential du. अगर path function होता तो यहाँ पे हम लोग del लिखते in exact differential. Okay. And if you remember, for exact differential also, by Euler's reciprocity, we write, let's say if z is a f comma x, if z is a state function, so then you can write dz can be written as df by dx y constant, मतलब del f by del x y constant into dx
plus del f by del y keeping x constant del x. So this can be also written for a path function. This can be also written for a path function. Okay. So that is Euler's reciprocity जो उन्होंने last day किया था. Okay. Now we'll stop here. In the next video we'll go for laws of thermodynamics. Thank you.